तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ रॉक माइन प्रिडिक्शन। ठीक है। बेसिकली इसमें करना क्या है कि सपोज व्हाट वी हैव, लेट्स से वी हैव अ सोनार डेटा, राइट? और ऑन द basis of sonar data, what we will be doing, we will be predicting particular whether a particular object is a rock or it is a mine, right? So this prediction can be used by the ships. Okay. तो ये जो सोनार डेटा है ये आपको इजीली जब आप कैगल पे सर्च करेंगे सो यू विल गेट दिस डेटा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर दिस आई विल बी यूजिंग गूगल कोलैब, राइट? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिडिक्टिंग वी आर प्रिडिक्टिंग वी आर creating a prediction model for rock and mine on the basis of sonar data। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी, लाइक विल बी यूजिंग, first of all we'll be using pandas, so import pandas as let's say pd, then which model we'll be using. So today we'll be using logistic regression model, right? From, so sklearn is the library, so sklearn dot model selection. What we'll import train test split, right? So as you are aware, so what we'll be doing, we'll be dividing our data into training data and the test data. For that we'll be using train test split. Okay. What else we need? So again, from library is same, sklearn dot linear model. So we'll be importing logistic regression model, right? So import what? Logistic regression, right? उसके अलावा हमें एक्यूरेसी स्कोर भी कैलकुलेट करना है। सो अगेन फ्रॉम sklearn dot metrics, we'll be import accuracy underscore score। ठीक है। these are the libraries that would be required। अब हमें क्या चाहिए? we need the file, we need the data file for the sonar data। so जैसे मैंने बताया, you can download it from the kaggle and you can upload it into this your google colab library, right? So for that I'll go to my files, right click करो, upload, and just browse to the that particular file। so here it is available, sonar data। so uploaded file will get deleted when this runtime is recycled। okay। so you can see कि ये जो files है ये यहाँ पे upload हो गई है, right? now I'll be reading this file। okay। so this is a csv file, so I have to use read underscore csv। उसके लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल ले लूंगा, लेट्स से यू कैन टेक एनीथिंग लाइक s underscore d sonar data equals to which is the library we'll be using. So we'll be using pandas library, so pd dot read underscore csv। csv फाइल हम रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
we'll be giving the location of the file. ठीक है, so क्या location कैसे मिलेगी? Just go to your file and simply three dots. I'll get this one, copy path. तो यहाँ से मैंने path copy किया and I'll paste it here, right? And you can see as this CSV file is not having any headers, I'll simply put header equals to none, right? सेल को रन करेंगे, सक्सेसफुली हमारी जो फाइल है वो रीड हो गई है. सो वी कैन सिंपली चेक दिस बाय यूजिंग like we can check the shape of this file. How? s_d, there is a file name dot shape. Okay, so this is the shape of the file. What does that mean? Like this particular data is having how many entries? 208 entries with 61 columns. Okay, तो अभी देखते हैं कि वो कॉलम्स क्या क्या हैं. सो आई लाइट s_d डॉट. तो यू कैन यूज हेड फंक्शन, राइट? सो हेड फंक्शन क्या करता है? इट विल प्रिंट फर्स्ट टॉप 5 वैल्यूज, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द फाइल, राइट? इसमें कॉलम्स कितने हैं टोटल? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 60, तो 61 कॉलम्स आर देयर. और इसने टॉप 5 एंट्रीज प्रिंट की हैं. सो यू कैन सी हेयर फ्रॉम कॉलम 0 to कॉलम 59 what we are having the input, right? And in the last column we are having the result. So here like you can see, meaning of R is actually what R means rock here, and M means mine. So for this particular data, what is the result? It is a rock. Okay, now if I say, like, if I look at there is another function tail. Okay, so tail will print the last 5 entries. Is similar to head function. So here you can see, like, if you look at this row 404, so it is predicting it to be a mine. So there are two possibilities. One is R, so R means rock, and other one is mine. Okay, M means mine. We can use other functions also. So, like we can use there's a function describe. I'll look into the details of this data using describe. So here you will have different matrices related to this data, like the count, how many values are there in a particular for a particular column. Basically, what does this column mean? So this column simply means features. Okay, we are having total 60 features. What is the mean of a particular column? What is the standard deviation? What is the minimum value? 25 percentile, 50 percentile, and so on. So these are the different metrics which are related to the data. Okay. So next step is what? Now I need to separate this input with the output. So in the last column I am having the output. ठीक है, तो जो पहले 60 कॉलम्स है वो बता रहे हैं इनपुट, और जो लास्ट कॉलम है वो बता रहा है आउटपुट. सो सिंपली आई डू, ये जो s_d है जहाँ पे मेरे पास डेटा है, दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. सो आई split this data into two parts, right? Suppose x denotes my input part. What I'll do simply, s_d, उसमें से मुझे क्या करना है? लास्ट कॉलम हटाना है. सो आई यूज ड्रॉप. ठीक है, एक कॉलम ड्रॉप करना है. सो ड्रॉप, एंड हेयर आई राइट द index of the column, so which I need to drop. So s_d dot drop columns equals to 60, and axis I'll take it as 1.
right? So you can just go into the details of these function. You can just put the name of the function on the Google and you will get all the details. What are the different parameters that I need to use, right? Similarly, I'll create one y. Y is what? That is actually denoting the output. So again, s underscore d. आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए. There is no need to drop anything. Simply I'll extract the last column. So last column is 60. जो मैंने ड्रॉप किया था x से उसे मैंने y में स्टोर कर लिया. ठीक है. So now what I have x and y. X denotes the input and y denotes the value outcome, right? तो हमने रन किया. So now I can look into the shape also. So I'll simply write x dot shape. What shape I am getting? So you can see 208 and 60. ओके. तो जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसमें हमारे पास टोटल 61 कॉलम्स थे. तो फर्स्ट 60 कॉलम इनपुट डिनोट कर रहे थे, वो किस में आ गए? एक्स में. द लास्ट रिजल्ट कॉलम इज इन द वाई. सो वाई की भी मैं शेप चेक कर सकता हूँ. इवन यू कैन सी, यू कैन लुक इनटू द वैल्यूज आल्सो. ओके. हेड यूज करके यू कैन लुक इनटू द वैल्यूज. तो वाई डॉट शेप, राइट. वाई की शेप कितनी है? 208 एंड देयर इज ओनली अ सिंगल कॉलम. ठीक है. I can check like y dot head I can use, right? So it is giving me a single column. So single column bacha and that is the output one. Similarly, I can look into the uh, sample values of x also. So x dot head. Okay. So 0 to 59. So first 60 columns are there in x. अब जो हमारा, so what we have done, we have simply created x and y. Now the next step is to split the data. This, okay. जैसे x में हमारे पास कितना डेटा है? सो वी आर हैविंग 208 number of data values having 60 features. So what I'll do, I'll simply split this data into training and testing part, right? So the split may be 70-30, it may be 80-20, right? uh, it may be 90-10 also. So that depends on how much data I'm having, right? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? we'll use train test split. x underscore train कोमा. ठीक है. तो ट्रेनिंग टेस्टिंग एक्स टेस्ट. सिमिलरली वाई ट्रेन वाई टेस्ट. ओके. क्या यूज करने वाला हूं मैं? ऑलरेडी मैंने sklearn से ही इंपोर्ट किया हुआ है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. sklearn इज अ scikit learn, that is a library for machine learning. सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस पे करना है एक्स और वाई पे, राइट. फिर एक इसमें पैरामीटर है टेस्ट साइज. टेस्ट अंडरस्कोर साइज ये बेसिकली क्या बताएगा कि आपको ट्रेनिंग में कितना डेटा रखना है और टेस्ट में कितना रखना है. इफ आई से लेट्स से 0.2. 0.2 का मतलब क्या है कि जो 20% डेटा है दैट विल गो टू द टेस्टिंग पार्ट एंड 80% जो है दैट विल बी देयर इन द ट्रेनिंग पार्ट. ओके. देयर इज वन अदर पैरामीटर रैंडम स्टेट. अगर आप रैंडम स्टेट में 1 देते हैं सो इट विल मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज. ठीक है. 2 अगर आप देते हो सो इट विल चेंज द ऑर्डर, लाइक all the rock values and the mine values would be mixed. So what I want is कि जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है उसमें 80%, दैट मीन्स द स्टेट हैज टू बी मेंटेन्ड. तो ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी जो 80% वैल्यूज हैं दे हैव टू बी फ्रॉम द rock and other 20% has to be from the mine, right? Okay, it will maintain the state for the timing. You can just remember this. If I run this, ठीक है, तो ये रन हो गया.
आप इसकी शेप चेक कर सकते हो. लेट्स से इफ आई से x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप. ठीक है. सो 166 वैल्यूज आर इन द training part, and if I write x underscore test dot shape, so rest of the values will go to test part. 42 values, 42, I'll not call it values, 42 records will go into the test part, and remaining 166 is in the training part. तो यहाँ पे split हो गया. Same thing you can check with the training part also. ठीक है. Y train, Y test. Now next part is to train your model. ठीक है. यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारे मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है. ट्रेनिंग द मॉडल नाउ. विच मॉडल? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. राइट. सबसे पहले, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्रिएट अ वेरिएबल मॉडल. यू कैन क्रिएट, टेक एनी नेम ऑफ द वेरिएबल. सो मॉडल इक्वल्स टू विच मॉडल आई एम यूजिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. राइट. Okay. And now I need to train my model. So model dot fit. और जो मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ? ट्रेनिंग डेटा पे. So here I'll pass parameters as x underscore train and y underscore train. ठीक है. कोई इशू नहीं है. मॉडल ट्रेन हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है? प्रिडिक्शन पार्ट. ठीक है. सो वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, सो विल प्रिडिक्ट द वैल्यूज, विल स्टार्ट द प्रिडिक्शन. और जो फाइनल स्टेप आएगा वो आएगा, विल वी चेक फॉर द एक्यूरेसी. तो अभी हम पहले ट्रेनिंग जो डेटा है उसमें प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है. x underscore train underscore prediction, again it is a variable name, equals to, with the name of the variable model dot predict. और किस पे करना है प्रिडिक्ट? हमें ट्रेनिंग डेटा पे. राइट. x अंडरस्कोर ट्रेन. ठीक है. नाउ विल चेक फॉर द एक्यूरेसी. ठीक है. अभी हम किसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे? ट्रेनिंग डेटा, मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं ऑन द ट्रेनिंग डेटा. सो विल सिंपली राइट ट्रेन अंडरस्कोर ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं. तो ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी इक्वल्स टू विच विल बी यूजिंग एक्यूरेसी स्कोर. तो एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर. ठीक है. किस पे चेक करना है? जो हमने प्रिडिक्शन की है. तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर प्रिडिक्शन. राइट. और इसे, अब सी, जो एक डेटा है उसने कुछ प्रिडिक्ट किया है. ओके. एंड वंस इट हैज प्रिडिक्टेड, सो वी नीड टू चेक इट विद द एक्चुअल वैल्यूज. तो एक्चुअल वैल्यूज हमारी कहाँ पे है? जो आउटकम है वो किसमें है? वाई अंडरस्कोर ट्रेन में. ठीक है. ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी तो यहाँ पे हम प्रिंट भी करा लेते. हो गया. अब देखते हैं एक्यूरेसी आई कितनी है. सो सिंपली विल राइट प्रिंट ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी हाउ मच. वो किसमें है? इसमें ये वेरिएबल है. राइट. पुट इट हेयर. तो जो हमारी ट्रेनिंग डेटा पे जो एक्यूरेसी आ रही है, ओके, दैट इज 83.13%. ठीक है. तो जब मैंने 80-20 स्प्लिट किया है, तो हाउ मच एक्यूरेसी आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा इज 83.13. नाउ we'll check this accuracy on the test data. Okay.
देखो, जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव सम डेटा विदाउट द लेबल्स, विदाउट द रिजल्ट। ओके, अल्टीमेटली हमें करना क्या है, किसी अननोन जो हमारा डेटा है उस पर प्रिडिक्शन करना है, राइट। तो हमने जो मॉडल ट्रेन किया था वो किस पे किया था, यू कैन सी हेयर, ट्रेनिंग डेटा पे। और उस डेटा पे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 83.13 आ रही है, राइट। ऑब्वियसली we expect the accuracy to be 100%, but practically it is not true. So if it is something like, if it is more than 80%, that is a good accuracy, right? और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो डेटा भी कम है, so as the amount of data increases, the accuracy also increases, right? Now we'll check the accuracy on the test data। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, और अब टेस्ट डेटा पे हम टेस्ट करेंगे। सो we'll use this, let's just copy this, put it here, and this one also। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेस्ट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ भी क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक? ये एक्यूरेसी किसकी आ रही है, टेस्ट डेटा की, तो टेस्ट डेटा एक्यूरेसी इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर। हियर आल्सो आई नीड टू पुट टेस्ट, और हाँ भी टेस्ट। ठीक है, हियर आल्सो आई विल पुट टेस्ट, दिस इज व्हाट, टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी, या टेस्ट डेटा है ना, लेट अस कॉल इट टेस्ट डेटा। तो जो हमारा टेस्ट डेटा है उस पे हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वी आर गेटिंग 80.95% ऑफ एक्यूरेसी, राइट। नाउ लेट अस जस्ट चेंज दिस स्प्लिट इनटू, लेट्स से 70-30। अभी देखते हैं इससे कुछ इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। ओके, सी देर इज नो thumb rule, right? There is no hard and fast rule. So what we need to do, we need to put the different changes, and then see how can it improve a result or not। Okay, so we may 70-30 लेके, then again I'll do the training of the model on the training data, right? पहले कितनी थी एक्यूरेसी हमारी, जब हमने 80-20 लिया था, सो इट वाज 83.13। लेट्स सी 70-30 पे क्या होता है। So you can see it improves, right? So now it is 84.13, और टेस्ट पे कितनी है, 80.95 है। अभी देखते हैं 70-30 के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑन द टेस्ट डेटा इट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो दीज थिंग्स हैपन्स, ओके। तो वो सारी चीजें आप यू नीड टू टेक केयर ऑफ, लाइक इफ आई जस्ट पुट इट एज लेट्स से 0.1। सो 0.1 का मतलब क्या है, कि जो हमारा 10% ऑफ द डेटा आई विल बी यूजिंग फॉर टेस्टिंग, एंड 90% ऑफ द डेटा आई विल बी यूजिंग फॉर ट्रेनिंग पार्ट, राइट। ऑब्वियसली ट्रेनिंग पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आनी चाहिए, क्योंकि द मोर डेटा यू विल गिव टू द सिस्टम, ऑब्वियसली इट्स its accuracy will obviously be improved, right? तो फिर से ट्रेन कर रहे हैं। ओके, let's see how much accuracy I'll get on the training data। ट्रेनिंग डेटा पे मैंने चेक किया, ठीक है। सो अगेन इट हैज इम्प्रूव्ड, सो फ्रॉम 84 पॉइंट समथिंग टू नाउ इट इज 85.56। ठीक है, एंड वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस, कि ये जो हमारा टेस्ट डेटा पे जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। टेस्ट पे अभी 77.77 थी, तो देखते हैं अभी कितनी आती है। तो नाउ इट इज 71.42, राइट। So there is a kind of trade-off. Now there are some questions like why I'm getting this much of accuracy, why I'm not getting 90% of the accuracy. So one is we are having lesser amount of data। Okay, तो ये जो डेटा सेट है हमारा, ये छोटा डेटा सेट है। ऑब्वियसली जब हम डेटा को इंक्रीज करेंगे, तो जो आप अभी देखो, आपका सिस्टम जो है, जो मॉडल है,
it is taking a very lesser amount of time to get trained, right? तो जब आपका डेटा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग टाइम है, सिस्टम का मॉडल का ट्रेनिंग टाइम है, वो इंक्रीज करेगा, बट उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी इंक्रीज करेगी. सो दैट इज वन थिंग. अदर थिंग इज के जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, it is giving me some, like, on the test data, let's say it is giving me 75% of accuracy. So how it can be improved in real time situation? So one thing is, I may look for the other models also, right? There are other machine learning models also who may work better than this logistic regression. ठीक है? तो भी हम आगे डिस्कस करेंगे in the further problems, right? So that's it for this particular video. Thank you.